Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. Car crashes into electricity pole at Kandolim after driver falls asleep behind the wheel. Second such incident in less than 24 hours. Expect some cloudy skies to blow over the state, pulled by north winds. Low chance of respite from the heat as humidity and temperatures continue to remain fairly high. Eid ul Fitr, the holiest festival in Islam, celebrated across Goa, with Muslim brethren breaking their month-long fast. And now for the news in detail. Goa continues to grapple with an alarming rate of accidents haunting its roads. In Kandolim Saipem, a four-wheeler crashed into a pole after its driver reportedly dozed off behind the wheel. Fortunately, the driver suffered only minor injuries. This marks the second such incident within a span of less than 24 hours, the previous being Wednesday evening's crash in Usgaon, resulting in the death of a 6-month-old infant. Here's Nitiksha Kaukar with more on this. गोंय राज्यात अपघातांचे प्रमाण बरेच वाडला. अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचे नांव घेयना. दिसान दीस आमकां एक ना एक घडणूक आयकपाक येताच. आयज सकाळी फांतोडेर 3 वरांचेर सायप्या कानोळे हांगा 4-व्हीलर कारीचो सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ह्या एक्सिडेंटान जो चालक आशिल्लो त्या चालकाक इंजरी जाल्ली आसा आनी ताचेर जीएमसीन उपचार चालू आसा. ही जी 4-व्हीलर कार आशिल्ली ताणें सुरवातीक लायटीच्या पोलाक धपको दिलो आनी ताच्या उपरांत जी रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ताका धपको दिल्लो आसा. ह्या एक्सिडेंटान ह्या चालकाक मार बशिल्लो आसा तशेंच ताच्या गाडयेचें बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. Nitiksha Gaonkar, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365. The Narcotics Control Bureau or NCB has made significant progress in its crackdown on drug trafficking in Goa. Notorious Nigerian drugs peddler Stanley and his wife Usha C have had their illegally acquired properties frozen by the authorities. The total value of these assets amounts to over 1 crore rupees. The NCB's Goa team seized 7.35 grams of cocaine from Raju S., a resident of Salegaon, on the 13th of February. Further investigation revealed that Raju was just a small part of a larger drug network operated by Stanley and Usha C., who reside in Kandolim. Subsequently, on 16th of February, the NCB successfully apprehended another associate named Michael, a taxi driver from Kandolim. Although Stanley had already been arrested by the Telangana police on the 5th of February in connection with an NDPS case, the investigation continued. It was discovered that Usha C, along with her husband, played an active role in drug trafficking and handling the illicit proceeds. As a result, Usha C was arrested on the 21st of February and efforts were initiated to identify the illegally acquired properties. The outcome of these efforts has seen properties worth over 1 crore rupees frozen by the NCB, dealing a significant blow to the drug network. Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Eid ul Fitr is among the holiest festivals in Islam. During this time, Muslim brethren observe a month-long fast from dawn to dusk, engaging in religious activities and spiritual contemplation. As the fast comes to an end and people celebrate Eid,
Let's explore some of the vibrant moments of Eid celebrations across Goa. इस्लाह मुस्लिमीन ट्रस्ट की तरफ से ईद उल फित्र की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए ईद उल फित्र को बहुत मुबारक फरमाए। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन नव्वर क़ुलूबल आरिफीन बिसिराजिल हिदायति वल फुरक़ान वशरह सुदूरुस साइमीन बिनूरिल मग़फ़िरति वल ईमान वअकरम इबादतुल मुमिनीन बिसियाम शहरि रमज़ान। फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। आज ईद उल फित्र मैं पूरे गोवा के वासियों को, गोवा के लोगों को और ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज हम ईद उल फित्र मना रहे हैं। पिछले एक महीने में रमज़ान शरीफ के ईद के महीने में हमने पूरे रोज़े रखे और रोज़े रखकर आज ये हम ईद उल फित्र मना रहे हैं। और हमारे इस रमज़ान मुबारक महीने में जो रोज़े रखे हैं इसमें हमने ये दुआ की कि गोवा हमारा हमेशा एक शांतिपूर्ण गोवा रहा है। इस दिन को हम सब के लिए दुआई से बरकत बनाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस दिन को मुबारक बनाए। और इस ख़ास दिन में हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस दिन की बरकत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन की बरकत से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए, मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमाए और रब्बुल आलमीन इस मुल्क में अपनी नेमतों का खूब फैज़ान फरमाए रब्बुल आलमीन। और अमन व शांति अल्लाह करीम इस मुल्क हिंदुस्तान में पैदा फरमा दे कि हर एक की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज रहे। ह्या निमतान हांव आमचे सगळे गोंयकारां हे जावं हिंदू भाव जावं आमचे कॅथलीक भाव जावं जैन जावं जाल्यार गुजराती जावं भोजा जावं सगळे आमचे गोंयकारांक आयज ईदाची उन्नीत पुरवी आनी अशें सगळे आमी मेळोन रावचे आनी सगळे एकवटान रावचे अशें हांव देवा कडेन आयज मागलां। आयज आमी देवा कडेन प्रे केला ही शांती गोंयांत जी आसा अशीच रावची आनी आमचे सगळे मुस्लीम बंधू जे आसा गोंयचे जे आसा सगळे जनतेक ईदाची जी आसा उन्नीत पूर दिसता आनी मागता देवा कडेन आमचे गोंयचे प्रमोद सावंत आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष जे आसा गोंयाक लागून जे आसा बरे कार्य करता आनी जे कोणी पॉलिटिशियन गोंयचे जे आसा जनतेक गोंयचे लोकांक लागून बरें काम करता आमी सदांच आमचे मुस्लीम भाव जे आसा सदांच जे आसा तांचे वांगडा आसतले आनी सदांच गोंयचे एकवटा खातीर आमी सदांच मुखार आसतले। आमी दोन ते एक पावल मारता जाल्यार आमी दोन पावल मुखार वचून गोंयचे जे आसा इतिहासाक गोंयचे जे आसा फुडारा खातीर गोंयच्या खातीर आमचे लोक जे आसा सदांच जे आसा मुखार आसतले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मुक़द्दस दिन ईद उल फित्र का अजीम दिन है। इलाक़ाई तमामी अफराद ने अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ा मस्जिद में हाजिर होकर हमने बड़े ही तज़्को एहतशाम के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने दुआ किया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ भी बेचैनी का माहौल है अल्लाह सारी दुनिया में अमन व अमान अता फरमाए। बिलखुसूस हमने शहर गोवा के लिए खुसूसी दुआ की कि यहाँ जितने भी अफराद हैं रह रहे हैं अल्लाह सब में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, सबको मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। और आज के इस मुक़द्दस दिन अल्लाह तबारक व तआला की हमने इबादतें की। रमज़ानुल मुबारक में हमने 30 रोज़े रखा
रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये इनाम से नवाजा कि ईद उल फित्र जैसा मुक़द्दस और अजीम दिन हमें अता फरमाया। अल्लाह करीम हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़े को कबूल फरमाए। फरमा दे अल्लाह भाई, अल्लाह चंद दिनों की ये अल्लाह जिंदगी है, अल्लाह कब खत्म होगी ये अल्लाह हमें उसका इल्म नहीं है, अल्लाह तू जानता है। अल्लाह जुल्म अज़ीम को माफ फरमा, ऐ अकरमुल अकरमीन, ये अल्लाह सबके जायज़ मकासद को अल्लाह पूरा फरमा दे, ऐ अकरमुल अकरमीन। आमकां जे देवान अवयव दिल्ले आसा, हात आसा, पांय आसा, दोळे आसा आनी कान आसा, रमजानाच्या म्हयन्यान आमी उपास धरता आनी आमकां शिकयता, रमजान आमकां शिकयता की दोळ्यांनी वायट पळोवचें न्हू, तोंडान आमी वायट कोणाचें उलोवचें न्हू आनी कानान हे वायट आयकचें न्हू, पांय आमचे वायट मार्गार वयचे न्हू आनी हातांनी वायट कर्म करचें न्हू। आनी हेच आमी रमजानचे जे आमी शिकवण घेतलेली आसा तीच अशी आमी फुडाराक आमी फुडें व्हरता आनी अशेच तरेन आमी चलपाचो जे आमकां आमच्या मोहम्मद पैगंबरान शिकयला पळय त्या प्रमाणे आमी चलपाचो प्रयत्न करता। हांव समस्त गोंयकारांक ह्या ईदा निमित्तान सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता। आमचे हिंदुस्तान राष्ट्रान सगळ्यांक एक मेळोन दवरचे आनी आमचे भाईचारा, पीस आनी सगळ्यांक दिवची आनी देशाची प्रगती जावची अशें आयज आमी मागलेले आसा। तेन्ना आमी सगळे कडेन मागता की सगळे आमी आज सगळे एकी कडेन रावया, देशाक आनीक फुडें व्हरुया आनी आमचे देश एक जगान नंबर 1 करचो अशें हांव بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र के सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इस इतनी गर्मी के मौसम में भी पूरे के पूरे 30 रोज़े हम सबके अच्छे गए। अल्लाह ताला से दुआ है इस ईद के बरकत से इस देश में सुख और शांति से रहे और भाईचारगी बने रहे और जितने भी बीमार लोग हैं इनके अल्लाह ताला शिफात करे और जो भी परेशान लोग हैं इनकी परेशानी को दूर करे और जो लोग इस ईद के दिन ईद नहीं मना सके कुछ जरियों से, कुछ तकलीफात से, कई लोगों के घरों में मौतें हो गई हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। एक दूसरे के गले मिलते भाईचारे पे और हमारे बहुत से तमाम हिंदू भाई, कैथलिक भाई हमारे घर में आते, हमारे साथ में शेयर करते, वो एक भाईचारा का पैगाम है और हम सभी मुसलमान की तरफ से हम सबको ईद मुबारक मैं करता हूँ और एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे वतन का सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा, ये बोल के मैं आपको ईद मुबारक करना चाहता हूँ। हम सब मिलके जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे अखलाक को देखकर जो है, हमारे किरदार को देखकर, हमारे जो है मामलात, मुआशरत, मामलात और जो सब ईमान इबादत हर चीज़ को देखकर वो भी जो है हमारे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। आणि गेले आता 30 दीस जाले तेंच्यांनी सगळ्यांनी या पाक महिन्या भितर 30 दीस तेंच्यांनी तेजे रोजा धरलेले आनी हर दीस ते रोजा मजिदा येवन ते सांजचे मागीर तोडटाले। सो असो तेंचो इतले मेन दिसाचो जो आसलो आनी आयज तेंचो जे नमाज आसलो नमाजाक हांव मुद्दाम तेंचे आमचे सगळे भावा बरोबर आसलेलो आनी खरेंच मनांसून बरें दिसलें की आयज आमचे आख्ख्या मुरगांवान आख्खे गोंया भितर सगळे जाण आमी एकामेका कडेन भावा भाशेन सगळे जाण रावता, सगळे जाण एकत्र येवन सगळे सण जशे आमचे ईद जालो, क्रिसमस जालो, दिवाळी जाले, सगळे जाण मेळोन आमी मनयता, खूब खुशी भोगता आनी सगळे जाण हांगेले आमचे भाव सदांच वांगडा रावलेले आसा आनी हांव देवा कडेन मागता की अशें ईदाच्या दिसाक सगळ्यांचे अशेंच तेंच्यांनी ब्लेसिंग दवरचें आनी सगळ्यांचें कल्याण जावचें आनी बरें जावचें। We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. Now for the weather. Some cloud cover is expected to blow into the area on Friday, pulled in by the north winds. With partially overcast skies, there is a low chance of some respite from the sun. But given the current spike in humidity, the weather is bound to remain uncomfortable and muggy. As we head into the weekend, there isn't much of a change that we're seeing in the weather pattern. Friday will start off calm and possibly a little cooler. The mercury value is expected to be around 26, making it the best time to schedule outdoor work. By noon, we're looking at temperatures of about 34 and 35, which may not seem too high, but the real feel will be around 40 thanks to the humid conditions. At night, the low will settle at a warm 25. Once again, we are warning citizens to spend the afternoons indoors and to keep up the intake of water and electrolytes. Temperatures this high are dangerous not just for young children and elderly folk, but also for seemingly healthy adults. Partly cloudy skies are expected on Friday. Temperatures remain above normal. Maximum and minimum temperatures on Friday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Northwesterly winds likely to increase humidity and temperatures. Early morning commuters want to stay alert for fog and light haze. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.